we are on the second last question of this exercise, and that is change the paragraph into past indefinite. हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उस वर्ब को हम लोगों ने past indefinite में चेंज करना है. Or student, if you don't know about the past indefinites and what are the structure and formatting of past indefinite, you have to visit my video in this chapter about past indefinite. We have discussed past indefinite thoroughly, and we have discussed over there the formatting as well as the structure of the past indefinite tense. हम उसको slightly overview करते हैं कि past indefinite वो tense है जिसमें हम किसी भी गुजरे हुए वक्त या माजी में किसी भी काम को या किसी भी एक्शन को या किसी भी इवेंट को बताने के लिए हम past indefinite यूज करते हैं. उस past indefinite में पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ. सिमिलरली हम डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट को यूज करते हैं और उसी डिड को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं. So students, let's change this paragraph into past indefinite tense. Media helps people to share the knowledge of the world. Their feelings and opinion are expressed through it. Media attract the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? So students, helps जो है वो यहाँ पे verb की second form helped people to share knowledge of the world. Their feelings and opinion are नहीं were expressed through it. Media attracted the attention of a very large audience. Have you noticed? Did you notice that the first thing we do did soon after entering the house is to switch on the television. So students, यहाँ पे हमने सब वर्ब की फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है. हेल्प्स था, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड होती है, तो हम लोगों ने मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड सेंटेंस में देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस नहीं, जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो आर जो है वो पास्ट में वर्ड के मुतरादिफ हो जाएगा. सो वी कैन से देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन वर एक्सप्रेस थ्रू इट. मीडिया अट्रैक्ट, first form of the verb will change into second form. Media attracted the attention of the very large audience. Have you noticed? It means यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट्स में, तो आप did को स्टार्ट में लेके आते हैं, तो have will change into did you notice that the first thing we do नहीं, first thing we did soon after entering the house is to switch on the television. Do की second form did and switch की second form switched. So student, we have changed the paragraph into past indefinite tense. I hope कि आपका concept past indefinite का और ज़्यादा strong हुआ होगा. I hope आपको ये exercise और ये topic समझ आया हो. Let's move to the last question of this exercise.